In the first chapter, we learned that what was the condition of Indian economy on the eve of independence. So you know that on the eve of independence, our economy was backward. So what to do to improve the condition of economy? So India chose planning system. So first 5-year plan was implemented from 1st April 1951 to 31st March 1956. This was the period for first 5-year plan. So what was the main objective of our planning? So look what has been written in your NCERT. I have once again told you that your each and every sentence in NCERT is itself a question. If teacher wants to make a question for 1 mark, then your NCERT will be preferred. So the central objective of planning in India is to initiate the process of development which will raise the living standard and open out to the people new opportunities for richer and more varied life. So this was the initiative process taken by the Planning Commission. So what was the initiative taken by the Planning Commission? So look, as you know that on 15th August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of British rule. So look what has been written. So now we are the masters of our own destiny. अब अगर मैं इस सेंटेंस को आज के रेफरेंस में कहूंगा तो मैं ये कहूंगा यू आर द मास्टर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी राइट नाउ इन दिस लॉकडाउन पीरियड. हम सिर्फ एक मीडियम है, हम तो एक छोटे से मीडियम है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ बैठकर, बट यू आर द मास्टर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आपको अगर अपना भाग्य बनाना है तो वो आपके हाथ में है. और एज ए स्टूडेंट आपको आपका एक ही ड्यूटी होनी चाहिए इस समय, वो है कि जो भी आपको कहा जा रहा है उसको फॉलो करें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को. अब आप कोई फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, जब तक आप फोर्स हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. सो the leaders of independent India, listen carefully, the leaders of independent India had to decide among other things the type of economic system. आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था और इकोनॉमिक सिस्टम में हमने हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी मींस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद दिस इकोनॉमिक सिस्टम. एंड ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना था दैट सूट्स आवर नेशन, जो हमारे नेशन को सूट करेगा. अ सिस्टम विच वुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन फ्यू. इट मींस हमें ऐसा प्रोडक्ट इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जो सिर्फ फ्यू लोगों को ना करे, सबको करे. दैट मींस व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? सेंटेंस मीन दैट हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो रिच को करे लेकिन पुअर को भी ज्यादा करे, बिकॉज रिच आर इन स्मॉल नंबर एंड पुअर आर इन लार्ज नंबर. सो वी हैव टू मेक इकोनॉमिक सिस्टम सो दैट वी कैन मेक हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. आपको पता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं. वो लिखा है कि बॉक्स में देखिए 2.1, तो आपको दिखा देंगे. इन तीनों के बारे में गिवन है, व्हाट टू, हाउ टू, होम टू. और इकोनॉमिक सिस्टम फिर हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सी इकोनॉमी होती है. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यू नो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. This is depend what to, how to, whom to. Now, and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. अब आपसे देखो यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है
कि विच इकोनॉमी पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट्स फॉर द नेशन, और यू कैन से किस नेशन उन्होंने उसको फेवर किया था। तो सोशलिज्म अपील टू मोस्ट। वैसे अभी हमारी इकोनॉमी तो नेक्स्ट उस समय बनी ही थी, तो हमने किसको फेवर किया? सोशलिज्म इकोनॉमी। तो इट मींस पंडित नेहरू की जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसीज थी उसमें मैक्सिमम हमारा जो एम था प्रोडक्शन का और जो उसको चलाने वाले थे वो गवर्नमेंट ऑक्युपाइड था, बिकॉज नेहरू ने सोशलिज्म को ज्यादा प्रेफर किया था। However, he was not in favor of the kind of socialism established in former Soviet Union. तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि जो पहले सोवियत यूनियन में था, where all the means of production, all the factories and farms in the country were owned by the government, कि सब कुछ सरकार का होगा, जैसे कि चीन में उसमें रूस में होता था पहले। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी वहां पर। इट वाज नॉट पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो जैसा इंडिया में तो शुरू से लोगों की जमीनों को चला रहा था, बड़े बड़े जमींदार थे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि सभी सरकार उनको अपनी जमीनें लेके सरकार अंडर में लेके और प्रोडक्शन स्टार्ट करे। तो उन्होंने तो जबरदस्ती किया था, हम लोग नहीं कर सकते थे ऐसा। सो व्हाट नेहरू चूज? नेहरू एंड अदर लीडर्स thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. So that's why India opted for which economy? Mixed economy. So this is the reason behind why India chose mixed economy. So answers on economic system in the view combined the best features of socialism and without its drawbacks. In this view, India would be a socialist society with strong public sector, but also with private property and democracy. So that means India opted for mixed economy. I hope you got the theory behind why India chose mixed economy. तो बस even though चाहते तो थे नेहरू कि हम भी एक सोशलिज्म को यूज करें, बट हमारे यहाँ पर जितनी लिबर्टी थी, लोगों की जमीनें थी, उनको छीन नहीं सकते थे। तो दैट्स वाई हमने एक ऐसा कहा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सोशलिज्म के फीचर्स ले लेंगे और कुछ प्राइवेट के फीचर्स ले लेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे और अपना इकोनॉमी बना लेंगे। तो आप कह सकते हो शुरू से ही इंडिया ने जुगाड़ की व्यवस्था की थी, पहले भी और अभी भी। चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन यू नो, एंड ये आपका एनसीईआरटी का अंदर गिवन है, तो आप इन तीनों को पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में व्हाट टू, हाउ टू, होम टू जो डिसीजन लेना था दैट वाज बेस्ड, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये सब अलग अलग मार्केट फोर्सेस में है। तो मार्केट फोर्सेस कैसे काम करेंगे, कैपिटलिज्म में कैसे होता है, सोशलिज्म में कैसे होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे होता है, तो यू कैन रीड दिस एट योर होम। ये तीनों इकोनॉमीज के बारे में है जो आप आसानी से अपने घर पे पढ़ लेना। These are the 3 types of economies. तो बहुत ही जनरल है, लगभग हम इन इकोनॉमीज के बारे में 7th क्लास से बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि कौन सी इकोनॉमी में किस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो ये दिस इज योर होमवर्क, रीड एट योर होम। नाउ व्हाट इज अ प्लान? आखिर प्लान है क्या? व्हाई इंडिया चूजिंग अ 5-year प्लान सिस्टम, और प्लान क्या है? तो प्लान स्पेल्स आउट हाउ रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन, लिसन केयरफुली, a plan spells out how resources of a nation should be put to use. This is plan. एक डेफिनेशन आप इसको जरूर लिख लेना, याद कर लेना। It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved with a specified period of time. तो प्लान एक ऐसा हो जिसमें हमारे जनरल गोल हो और प्लस कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो इन इंडिया प्लान्स आर 5-year ड्यूरेशन एंड आर कॉल्ड 5-year प्लान्स। सो वी बोरोड दिस फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन, द पायनियर इन द नेशनल प्लानिंग। तो अब आप देखिए प्लानिंग हमने किससे अडॉप्ट किया, तो आपको ये बात भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, फ्रॉम वेयर इंडिया
opted planning system. It was opted from the former Soviet Union. Our plan documents not only specify the objectives of the attained in the सर आपकी 5 आवाज क्लियर नहीं आ रही. okay. चलिए देखते हैं. Our plan documents, now it's clear. Now Yes, plan sir. documents not specify the objectives to be attained in 5 years of a plan, but also what to be achieved over a period of 20 years. तो इस मीन्स जो हमने प्लानिंग बना लिया तो हमें उसको 20 सालों में फिर से ये भी देखना है कि क्या अचीव किया. दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज अ पर्सपेक्टिव प्लान. तो 5-year प्लान आर सपोज टू प्रोवाइड द पर्सपेक्टिव प्लान. तो हमने 5-5 सालों के गैप के देकर प्लानिंग बनाया. ये हमने चूज किया था प्लानिंग के अंदर. अब प्लानिंग के अंदर हमारे हर चीज के अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो ये प्लान है. Next. So for the and planning, when we choose planning, then the first IPR policy 1948 was used. This is called IPR, Industrial Policy Resolution 1948. So IPR 1948 इस तरह से बोला जाता है इकोनॉमिक्स में. So IPR 1948, what was the objective of this IPR 1948? So it is a directive principles of Indian Constitution reflected this outlook. In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister and its chairperson. Era of the 5-year had begun. So ये जो ऊपर का IPR था, it was a policy regarding the economic system. So IPR economic system says that India would like to choose planning with respect to mixed economy. तो IPR 1948 के बारे में आपको मैं नोट्स में लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 1958 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ एंड हु वाज इट्स चेयरपर्सन. So its chairperson, who was its chairperson? The chairperson was, can you name the chairperson? Who was the chairperson? Yes, Jawaharlal Nehru, because Prime Minister was a chairperson, and you know who was the Prime Minister at that time? So it was Jawaharlal Nehru. Yes. Now we will discuss the objectives of planning commission or planning, sorry. So what were the objectives of planning? The first objective is growth. So look, the first objective of planning is growth. First objective is growth. खुशी, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट ना करें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं जानबूझकर. जब आपको बोलना है तभी आप अनम्यूट करेंगे. It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. So first of all, you have to learn this definition. What is growth? So listen again. It refers to increase in the country's capacity. तो growth करनी है, तो country में जितना capacity है उसको बढ़ाना है. To produce the output of goods and services within the country. देश के अंदर रहकर. तो अभी आप कंट्री के अंदर रहकर जो आपकी कैपेसिटी है उससे मैक्सिमम आउटपुट को बढ़ाना ग्रोथ कहलाता है. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking. These are some supportive services for the growth, because without transport, without banking, you cannot make growth. So, or increase in the efficiency of productive capital and services. So these are the some factors for growth. You can
highlight these that what आपसे पूछेंगे what are the factors for the growth. So growth के लिए क्या चाहिए आपको? You need transport, you need banking, you need capital. These are the three main points for the growth. इस तरह से पढ़ना है आपको, एक एक लाइन को समझना है एनसीईआरटी के लिए. बहुत समय आपके पास है, घर में सारा दिन रहोगे, क्या करना है उसके अंदर? ये हर्ष, हम यही काम करते रहे क्या, बैठकर बार बार आपको क्लास में एडिट करते रहे? ओके, just wait for a few seconds. So what we are learning? We are learning growth. And for growth, I told 3 points: transport, capital, and what was that? Third one? Banking. Banking. Okay. Now, for this, if you have all these, अब ये किसने राइज कर दिया? ऑटोमेटिकली हो गया, मैंने किया. Okay. Now, if you have all these things, that means your GDP will increase. So what the definition is given in the GDP? So you can learn this definition. GDP is the market value of all goods and services produced in the country during a year. So this is the definition of GDP. ऐसे आपने पढ़ भी रखा है मैक्रो के अंदर भी. So you can think the GDP as a cake, and growth is increase in the size of cake. If cake is larger, more people can enjoy it. It is necessary to produce more goods and services if people of India are to enjoy. So that means अब growth आपकी किससे relate कर दी गई है? GDP से. So if GDP increases, that means growth increases. And how it is being compared? So naturally it is being compared by the cake. पर अब आप इसको कैसे करोगे? जितना ज्यादा केक उतने ज्यादा फेसेस पे एंजॉयमेंट. कैसे होगा? आप लोग केक खाते थोड़ी नहीं है. आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है, केक आता है और फिर उसको सबके चेहरे पे लगा देते हैं, खाने लायक उसको छोड़ते ही नहीं है. अब मैं इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैंने डिसाइड किया कि अब केक लाऊंगा अपने बच्चे के बर्थडे में तो सबसे घटिया लाऊंगा, और भाई जो खाना तो है नहीं, इसको चेहरों पे तो लगाना है, क्या पैसे वेस्ट करने का. आप लोग भी यही करना. चलिए थोड़ा सा और मैं डिस्कस करता हूं, ग्रोथ खत्म करेंगे. द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अब कौन कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं जिससे जीडीपी राइज होती है? आप सबको पता होगा. दे आर द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. नेमली एग्रीकल्चर, अब नाम दे भी दिया इन्होंने, इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द each these sectors make the structural composition of economy. In some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP. अब बताएंगे आप हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर से कितना ग्रोथ है, आता है? उस समय कितना था, कौन बताएगा? 85% था सर. 85%. वेरी गुड, उस समय था. अब हमने प्लानिंग को यूज किया तो इसमें चेंज आया. चेंज आएगा बताएंगे.
एंड व्हाइल द सम कंट्रीज ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो हम कुछ कंट्रियों में एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कुछ में सर्विस ज्यादा करता है, तो मोर टू द जीडीपी। तो दिस इज द ग्रोथ कॉन्सेप्ट। नाउ वेट, अब अंदर इसमें एक पॉइंट है, अभी मैंने एक पॉइंट बताया है, अब दूसरा देखिए जो प्लानिंग है आपकी, लुक दिस फेस, दिस इज पीसी महानलोबिस, प्रभात चंद्र महानलोबिस। इन्होंने ही प्लानिंग को सबसे पहले यूज किया था। तो आर्किटेक्ट प्रशांत चंद्र महालनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग। तो जो प्लानिंग बने थे उनके आर्किटेक्ट हैं ये, इनका नाम है प्रशांत चंद्र महलनोबिस। इनका जो बर्थ हुआ था वो कोलकाता में हुआ था 1893 में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल फेम 1946 में ये एक फेलो मेंबर बने थे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एंड साथ ही अब कुछ बच्चे इसमें गलत समझ जाते हैं, पेपर इस बार आया था, तो महलनोबिस एस्टैब्लिश्ड आईएसआई। अब बोलते हैं आईएसआई तो आतंकवादी का उस ग्रुप था, नहीं, तो इट वाज इंडियन स्ट्रेटेजिकल इंस्टीट्यूशंस इन कलकत्ता, उसके उन्होंने एस्टैब्लिश किया सबसे पहले। और इन्होंने फिर एक संख्या नाम का जनरल यानी एक मैगजीन वो इशू करनी शुरू की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, एक जनरल मीन्स एक मैगजीन आती थी, उसका नाम था संख्या, which still serves the perspective form of establishment to discuss their ideas. Both Indian Statistical Institute and Sankhya are highly regarded by the statisticians and economists world today. So this was the person who is responsible, or you can say who made India to make growth. तो पीसी महालनोबिस, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा और अच्छे से ये जो मैंने हाईलाइट वर्ड किए हैं इनको आप जरूर अच्छे से देखना। और कोई इसके बारे में वो तो नहीं आएगी कि हाँ इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के जो मैं हाईलाइट कर दिए। तो पहले आपसे पूछ सकते हैं हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग देखिए, तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग ये हो गया पीसी। नेक्स्ट आपसे शॉर्ट में आएगा वेयर वाज ही बोर्न, तो ही वाज बोर्न इन कैलकाटा। व्हेन ही वाज बोर्न 1893। और वेयर ही वेंट फॉर फर्दर स्टडी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उन्होंने स्टडी की। तो उसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं तो आप आराम से देखें ना। इन्होंने कौन सा ये क्वेश्चन आया था रटने के लिए कि संख्या नाम का, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है बार बार। अब सर्विस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा है इसमें, ये और देखिएगा। मैं फिर से कह दूं, जो भी आपके ब्लैक बॉक्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। सो व्हाट हैज बीन रिटन हियर, सो हैव अ लुक हियर। एज ए कंट्री डेवलप्स अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे जैसे कोई भी कंट्री हम डेवलप करते हैं, देखो अभी तो आपने बताया कि 85% हम लोग एग्रीकल्चर में थे, 10% हमारा इंडस्ट्री था, और 15 नहीं 5% सर्विस सेक्टर था, क्या था उसमें टाइम सर 15 था और 10 था, वो 75 था सर। अच्छा वो ऑक्यूपेशन सेक्टर, हाँ 75, 15 और 10, ठीक, ये सर्विस सेक्टर था। दिस वाज द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ so in this occupation structure system, as we make growth, so your agriculture sector decreases and industry sector increases. And so what was the role of this service sector? So look, in the case of India, structure changes is peculiar. Usually development, the share of agriculture declines. अब देखिए जो मैंने बताया एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, एंड शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स डोमिनेंट, इंडस्ट्री हैवी होगी। अ हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी देन द अदर टू सेक्टर्स इन इंडिया।
अब अगर और डेवलपमेंट हुआ तो हमारे पास सर्विस सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू अदर। इन इंडिया शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज मोर देन 50%, as we would expect for a poor country, but by 1990 share of service sector was 40.59%, more than that of agriculture or industry। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ज्यादा मिल हो गया था, ना तो एग्रीकल्चर इतना दे पा रहा था ना इंडस्ट्री, तो सबसे ज्यादा हमें किससे मिल रहा, सर्विस सेक्टर से। Like we find developed nations, this phenomena of growing share of service sector was accelerated in the post 1991, और 1991 के बाद तो हमने इसमें और भी ज्यादा एकदम से उछाल आया बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो अभी कुछ बच्चे गलत पढ़ लेते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रहा है। नो, हमारा सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी को मिल रहा है तो दैट इज फ्रॉम दी सर्विस सेक्टर। आज इंडिया में सर्विसेज बहुत दी जा रही हैं। हम लोग पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रियों में काम करते हैं। हमारे यहाँ पर कितने बीपीओ खुले हुए हैं, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज गिविंग मोर जीडीपी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो ये आप थोड़ा सा समझ लेना, इसको मिसगाइड मत करना। सो दिस इज द फर्स्ट concept I explained today, and if we can also have a look now, these are my notes, so I'm explaining my notes। first question also, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, तो देखिए जरा आपके में क्वेश्चन आएगा। अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ा, उसमें से जो था अब हमने बनाया कि क्वेश्चन ऐसे किस तरह से आएगा। तो लुक एट दिस, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, फिर भी मैंने लिखी है। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन टू कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस टू नेशनल प्रायोरिटीज। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो मैंने बताया था कि हमने 1951 में फर्स्ट प्लान बनाया और हमने प्लानिंग को यूज किया। पीसी महलनोबिस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो जब वो पीसी महलनोबिस आर्किटेक्ट थे तो उन्होंने प्लानिंग को बनाया, तो उनके फीचर्स क्या थे प्लानिंग के, प्लानिंग होनी चाहिए तो कैसे फीचर्स हो। तो फर्स्ट है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इट मींस कि ऑल द प्लान आर regulated by a central authority, as we opted for the mixed economy and Nehru preferred socialism, so that's why planning was under the control of government। So central planning authority means there is a single authority that will handle all the aspects of the society। Determination of target, according to this we will set a target and target set prospective plan। मैंने आपको बताया था अंदर पढ़ा, टारगेट सेट करेंगे, prospective plan, what to do immediately and what to do in long term। so this is determination of target। fixed time, I have told you that planning was considered for a period of 5 years। full control of government, each and every decision was to be taken by the government and government decides it at its own level। first of all it decides at central government level, so what the central government decide has to be accepted by all the state government or state then local government। social progress, so if you will make a planning such way that social progress should be there। so what was the features, so features should be social progress honi chahiye and it should be long term process, because India was just at birth, you can say birth, because 1947 में तो देश आजादी हुआ था, 1915 प्लानिंग बनाया, तो हमारा प्रोसेस था लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अभी क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे कि हमने आने वाले 5 साल में क्या करना है, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस। so these should be the features of planning। तो जब पीसी महालनोबिस ने प्लानिंग को बनाया तो उन्होंने अपनी प्लानिंग में इन फीचर्स को रखा था। so that's why this is a question I have explained to you। you can go through with your textbook, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें आपको इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और हमने और भी क्वेश्चंस होंगे वहां इसके बारे में दिया होगा। नाउ लेट्स एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन।
So next one is importance of economic planning. So what was the importance? And importance refers to रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंपॉर्टेंस था कि अभी आपने मैंने पढ़ाया था, उस थ्योरी में लिखा था कि हमें ऐसी प्लानिंग चाहिए जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो. दैट मींस जीडीपी हमारी राइज हो और साथ में ग्रोथ भी हो हमारी. फॉर कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज. फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो प्लानिंग ऐसा हो जो अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व करे. फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो दीज आर द importance of planning. So you have to read all these, and each and every question will be for 3 marks in your exam. And make sure you have to explain sentence, these all headlines in your own sentence. I have explained here, written here, explain your own words. क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो सेम के सेम लाइन रटता है, उसको याद नहीं करता है. तो अभी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज एक्सप्लेन. सो दिस मींस इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मींस जीडीपी इंक्रीज करना. तो हमने एक कर दिया और रिमेनिंग हमारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो आई एक्सप्लेन टुडे व्हाट इज प्लान and what are its objective and what is growth. So thank you very much for today's. Is related with GDP. So if GDP increases, that means growth will also increases. And you know that what is the maximum contribution, or you can say which sector contribute most to the GDP. And I told you that right now GDP is most contributing is our service sector. And but at the time of independence there was only one contribution that has more effect, and that was primary sector. So what lead to modernization? To increase the production of goods and services, the producers have to adopt new technology. अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो नेचुरली यू नीड न्यू टेक्नोलॉजी. For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seeds variety instead of using old ones. तो अगर आपको एक फार्मर है, फार्मर को नई किस्म से प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसको न्यू सीड्स वैरायटी यूज करने पड़ेंगे, जिसको बोला गया था HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं इनको. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. इसी तरह से अगर मशीन में फैक्ट्री प्रोडक्शन करना चाहती है ज्यादा तो उसे नई मशीन यूज करनी पड़ेगी. Adoption of new technology is called modernization. So that means modernization means when we use or adopt new kind of technology in any sector of the economy is called modernization. So modern बनने का मतलब यहाँ पर, आधुनिक बनने का मतलब यहाँ पर कि हम अपने एग्रीकल्चर में न्यू फॉर्म्स ऑफ वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन यूज करें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में न्यू मशीन को अडॉप्ट करें, और सर्विस सेक्टर में हम न्यू और मॉडर्न वेज में हम अपने सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे. सो दैट अब आप देखते हो इसमें एक नया हमारा आ गया बीपीओ. अब बीपीओ में क्या होता है, बिजनेस जो हमारी बीपीओ कंपनीज है बहुत सारी, हम बैठे बैठे यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के लिए हमारे जो यंग लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर को इंप्रूव कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर. सो लुक, अब आगे इसमें हमारे पास कुछ कोर कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है मॉडर्नाइजेशन के अंदर. However, modernization does not refer to only use of new technology. अब केवल न्यू यूज करना नहीं है, it also changes the social outlook, such as recognition that women should have the same rights as men. अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात दी है, ये आपको पता होनी चाहिए. तो मॉडर्न बनने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने नई टेक्नोलॉजी यूज कर ली, नए मेथड यूज कर लिए, आपको वुमेन को सेम राइट्स भी देने होंगे जितने की मैन को है. इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन ए हाउस वाइल मैन वर्क. तो पुराने समय के अंदर तो ये ऐसा होता था, बट मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक्स, factories, schools,
etc. And such a society is most occasions is also prosperous. तो इसलिए तो मॉडर्न बनने का मतलब आपने दो फॉर्म में इसको जाना. तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मॉडर्नाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो दैट मींस यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू adaptation, and plus giving equal rights to all the women of a country. So this is called modernization. Now the next objective is self-reliance, atmanirbhar. So self-reliance refers to atmanirbhar. So look, what does it mean? So a nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be made in our own country. So that means, look again, I'm giving a brief description. That first was growth. Second, you just know modernization. So for these, if you want to growth, if you want to modern, plus in that case you have to be self-reliant. आत्मनिर्भर बनना है, हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है. कैसे? तो देखिएगा, प्रोड्यूस इंडिया इटसेल्फ, इट मींस जो आप अपने कंट्री में खुद बना सकते हो उनको यहां बनाइए. This policy was considered as a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. अब देखिए उस समय, ये हमारी कितनी 1950 की बात है, ये 1950. उस समय हम लोग सब कुछ मंगवाते थे बाहर से. किस, और बाहर से कहां से आता था? ब्रिटेन से आता था. और वो 1950 की कहानी आज आप देख रहे हैं 2020 में रिपीट हो चुकी है. आज उस समय हमारी तो हमको फोर्स किया गया था कि आप हमारी चीजों को, फिनिश गुड्स को लीजिए. तो जब हमने न्यू टेक अपने देश में आजादी ली तो हमने अपने आप को पाया, तो हमने कहा हमें ग्रोथ करनी है, हमको मॉडर्न बनना है, हमको सेल्फ रिलायंस बनना है. अब जब सेल्फ रिलायंस की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है. इसका मतलब जो चीजें हम अपने कंट्री में बना सकते हैं उनको अपने यहाँ पर ही बनाएंगे. लेकिन उसके बाद की ऐसी पॉलिसी आई जो हमारी ये सब फेल होते चले गए. कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन शुड give importance to self-reliance. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in her policy. तो अगर हम दूसरे देशों से इन चीजों को यूज करते रहेंगे तो हम उन पर निर्भर हो जाएंगे और वो लोग हमारी सोवरेनिटी पर बीच में दखल दे सकते हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सेल्फ रिलायंस. तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी था. इसीलिए अभी आप देखिए, जो हम आज के हम टाइम के अंदर रेफरेंस करें तो हम आज अब बात क्यों उठ रही है फिर से सेल्फ रिलायंस होने की? सेल्फ रिलायंस बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर अब रिसोर्सेज जो है वो दूसरे कंट्री की जीडीपी को ग्रोथ करा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई हमारी जीडीपी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है. तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है. तो इसलिए कहा है अब मोदी गवर्नमेंट ने कि हमें लोकल फॉर वोकल होना है. इसका मतलब अपने देश की चीजों के लिए ही हमको प्रमोट करना है, उन्हीं को बाय करना है. तो दैट्स वाज डिमांड फॉर टुडेज टाइम. नाउ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर योर इज इक्विटी. देखिए 4 हमारे पास हैं, ये 4 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग के. पहला आपने देखा ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, third self-reliance, and fourth is equity. So what is equity? So look, now growth, modernization, and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. So ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये सब कुछ है तो वो कंट्री पॉवर्टी के अंदर नहीं हो सकता. इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल एज बीइंग
well enjoyed by only by the rich. तो इक्विटी का मीनिंग यहाँ पर है कि रिच को जो फैसिलिटीज मिल रही है तो उस तरह से पुअर को भी वो मिलनी चाहिए। इन दोनों के बीच में इक्विटी लाना, समानता लाना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। सो एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज हर बेसिक necessities, needs such as food, decent house, education, healthcare, equality in distribution of wealth should be reduced. तो ये है इक्विटी। तो इक्विटी का मीनिंग आप समझ गए। इसका मतलब है कि अमीर गरीब के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। सबको, अगर अमीर अपने पैसे से खरीद सकता है तो गरीब को वो चीजें गवर्नमेंट को देनी होंगी। तो दैट्स व्हाई, so this is the 4 objectives of your economic planning. So let us now see how the first 7 5-year plans, इनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम एक डिस्कशन जा रहे हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर। So look what I have told you. Now, so look students, this is the flow chart of your economic planning. So till now I explained to you what are the objectives word है ये, objectives. So I explained to you modernization, I explained to you modernization, and then growth. Second point is growth, self reliance, sorry growth तो नीचे था ही था, और equity. These are the 4 objectives given in your NCERT. And so what is the short term objectives according to this? So short term objectives of planning is to increase in agriculture production. ये spelling mistake थे. To increase in agriculture production, this is the short term objective for the growth. To make equal distribution of income and wealth. अब income wealth में equal हमें क्या करना था, same equal लाना है, तो this was the equity. मतलब सभी में हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे। टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके लिए हमें क्या था, जीडीपी को बढ़ाना है, ग्रोथ लेके आना है। टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी, टू स्टैग्नेट प्राइस रेट, इसका मतलब है प्राइस राइज नहीं होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड टू मेक एजुकेशन टू ऑल, ये इक्विटी के अंदर आएगा। तो दीज आर द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो अभी हमने क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो ये तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इनके सब पार्ट्स क्या निकल कर आएंगे, तो सब पार्ट्स हैं आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। देन अचीवमेंट्स हैं, तो वो हमारा बाद में कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या क्या हमने अचीव कर लिया अपने प्लानिंग के थ्रू, वो हमारा बाद में है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जस्ट अ मिनट, फाइल हटानी पड़ेगी। Now let's find out what you have learned in my last class. क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पता तो चले कि मेरे बच्चों को आ भी रहा है नहीं आ रहा है। I will ask a name and you will have to tell the answers for the question. So Arinav Garg,
Arinav Garg. Second chapter, that was Indian economy. Your chapter is Indian economy 1950 till 1990. This is the second chapter of your NCERT, and we have opted plan, or you can say 5-year plan. So in the 5-year plan, we set the 4 main objectives. That was growth, objective number 1, modernization, objective number 2, self-reliance, objective number 3, and equity, objective number 4. Now, so these were the objectives of planning. So to achieve these objectives, agriculture cannot be denied, because our most of the people, or you can say 70 to 80% people, were engaged in agriculture sector. So without the prosperity in agriculture sector, the economy cannot have growth. So what is the agriculture and how it can be achieved in a better way? So we will discuss this topic, agriculture, now. So the policy makers of independent India had to address these issues, which they did through land reforms and promoting HYV seeds, high yielding variety seeds. तो अगर हमको एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना है, सो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने 2 मेन चीजें यूज की. 1, you can say land reforms. 2nd, you can say HYV seeds, high yield variety seeds. So what is land reforms? So look, what is the land reforms now? At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries, variously called zamindar. Last class में मैंने इन सबके बारे में बताया था. जमींदार, जागीरदार, who merely collect rent from actual tillers of the soil without contributing towards the improvement of the farm. तो उनका काम था सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना, और जबकि टैक्स कोई लेता है तो उस टैक्स के पैसे से वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं. अब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो उस टैक्स से हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, हमारे रोड्स बनाती है, हमको मेडिकल फैसिलिटी देती है, हमको एजुकेशन देती है, और भी चीजें सुविधाएं देती है. बट जमींदार्स ने क्या किया? जमींदार्स ने टैक्स तो लिया, बट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑन द फार्म. परंतु उस जो फार्म है, उस फार्म पे इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया. भाई टैक्स कोई लेगा तो आप उसके इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ करो, बट उनका एम ऐसा नहीं था. द लो प्रोडक्टिविटी of agriculture sector forced India to import food from USA. most important लाइन बेटे सभी ध्यान देना, मैं आपसे एक एक पॉइंट समझा रहा हूं और आपको समझने पड़ेंगे, वो तभी आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे. तो जब हमारा प्रोडक्टिविटी लो रह गया तो इंडिया को उस समय फोर्स भी होना पड़ा था कि हम यूएसए से फूड आइटम तक इंपोर्ट करें. लुक एट दिस फूड, यानी गेहूं, चावल, दालें वगैरह, हमें ऑयल वगैरह भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सो इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स, which primarily refer to change in the ownership of the land holdings. तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया? हमने लैंड होल्डिंग्स की ओनरशिप में चेंज किया. So just a year after independence, steps were taken to abolish intermediators. तो सबसे पहले हमने intermediaries को हटाना शुरू किया and make the tillers owners of the land. और जो टिलर्स होते थे उनको हमने ऑनर्स बनाना शुरू कर दिया. ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूं. एक मैंने आपको वो भी भेजा हुआ है, इससे रिलेटेड फाइल भेजी हुई है, वो आप देख लेना. The idea behind this move was ownership of land would
give incentive to the tillers to invest in making improvements provided sufficient capital was made available to them. So what is land ceiling? So look, what is the land ceiling? Land ceiling was another policy to promote equity in the agriculture sector. This means, look clearly, land ceiling का meaning. This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce concentration of land ownership in a few hands. That means if a person has more than land a certain limit, then the entire extra land will be taken by the government and the compensation will be given to the landlords. And the extra land which has been taken by the government to be distributed to the tillers or the landless farmers. So this was the land ceiling. क्या समझे कि जो भी एक लिमिट है, सपोज कर दो लिमिट सेट कर दी कि किसी पर्सन के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन, एग्जांपल ले रहा हूं बेटे बस, किसी पर्सन के पास 100 एकड़ से जमीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमने सेट कर दिया कि मैक्सिमम लिमिट 100 हेक्टेयर है। अब 100 से ज्यादा एक के पास 120 जमीन निकली, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 20 हेक्टेयर को उससे ले लेगी और उसके बदले में उसको कंपनसेशन कर देगी, पैसे दे देगी उसको, और वो 20 हेक्टेयर जो एक्स्ट्रा लैंड है वो टेलर्स को दे दी जाएगी उन पे एग्रीकल्चर करने के लिए. So this was called land ceiling. Now abolition of intermediaries mean that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government. अब जब हमने इंटरमीडिएट्स हटा दिए तो 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो सीधे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ गए. दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द जमींदार्स, और इस प्रकार इसे जमींदार के एक्सप्लॉइटेशन से वो लोग बचे. द ओनरशिप conferred on tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आना शुरू हो गया क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आने से वो लोग इंसेंटिव था वो एग्रीकल्चर में यूज किया उन्होंने. However, goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries in the some of the former zamindars continued to own large land of areas of land by making use of some loopholes in legalization. There were cases tenants were evicted from the landowners claimed to be self-cultivators, claiming ownership of land, and even when tillers go to ownership of land, the poorest of the agriculture laborers such as sharecroppers, landless laborers did not benefit from the land reforms. आपको तो ये तो खैर पता ही है कि हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें लूप होल्स तो होते हैं, तो उन लूप होल्स का यूज करके पहले भी उन लोगों ने इस पॉलिसी को सक्सेसफुल नहीं होने दिया था. नेक्स्ट, लैंड सीलिंग legalization also faced hurdles. The big landlords challenged the legislation in the court, delaying its implementation. They used this delay to register their lands in the name of close relatives. अब उन्होंने क्या टेक्निक शुरू कर दी, कोर्ट में चले गए, जो भी बड़े बड़े वो थे लैंडलॉर्ड कोर्ट में गए, फिर इन बिटवीन उन्होंने अपनी जमीनों को अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिया, escaping from the legislation. The legislation also found a lot of loopholes which were exploited by the big landlords to retain their land. Land reforms were successful in Kerala. अब देखिए ऐसा नहीं कि पूरे भारत में नहीं हुआ था, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली हुआ था. सुन लीजिए अच्छे से कहां-कहां हुआ है. केरला में, वेस्ट बंगाल, because these states had government committed to the policy of land to the tillers. तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो पूरे इंडिया में तो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट केरला और वेस्ट बंगाल में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए. Unfortunately, the other states did not have the same level of commitment and vast inequality of land holdings continues to this day. तो आप ये कुछ है लैंड्स के बारे में, तो जो क्यों सब कहां-कहां हुआ ये दो नाम आपको याद होने चाहिए. अब हमारे पास है ग्रीन रेवोल्यूशन. आप सबको पता ही है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो एक 8th 9th क्लास में हम बताना शुरू कर देते हैं. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था और क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है. सो लुक, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन.
At independence, about 75% of country's population was dependent on agriculture. So 75% depend on agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low. Because of use of old technique and absence of required infrastructure for the vast majority of farmers, India's agriculture virtually depends on the monsoon, and if monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had access to the irrigation facilities, which is very bad. Few had. The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. This refers to large, now this is a definition of Green Revolution. This refers to large increase in production of food grains resulting from the use of HYV seeds, especially for the wheat and rice. तो जब आपने मॉडर्न टेक्निक यूज करके HYV सीड्स यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन किया, वो भी व्हीट एंड राइस का, तो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन. The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticides in the correct quantities as well as regular supply of water. तो अब आपको ये seeds use करने हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए और वाटर चाहिए प्रॉपर. The application of these inputs in correct proportion is vital. The farmers who could benefit by HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizer and pesticides. That means आपको ये purchase करना पड़ेगा. As a result, the first phase of Green Revolution, mid 1960 up to 1970, use of HYV seeds was restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिच होना जरूरी था, पैसे होने जरूरी थे. तो जो स्टेट रिच थे, जिनके पास पैसा था, वो टाइम पर पेस्टिसाइड्स परचेज कर पाए, HYV सीड्स परचेज किया, फर्टिलाइजर परचेज किया और इरिगेशन फैसिलिटीज को इंस्टॉल कराया. इन सबको प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी था और जिनके पास था वो वहां पर ये सक्सेसफुल हो गए. तो दैट मींस यू कैन से दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेस ओनली इन फ्यू स्टेट एंड दे आर पंजाब, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Further, the use of HYV seeds primarily benefit the wheat. और केवल ये नहीं कि सब पे फसल हुआ, केवल wheat growing regions only. जो जहां जहां wheat उगता है उन्हीं रीजन में सफल हो पाया. In the second phase, HYV technology spread larger number of states, benefited more variety of crops. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer had to be the mercy of America. अब आपने देखा कि अभी हम फूड ग्रेन्स अमेरिका से मंगा रहे थे 1953 से लेकर और अप्रोक्सीमेटली हमने 1975 तक हमने अमेरिका से फूड ग्रेन्स बीच बीच में मंगाया. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया. हम इतना प्रोडक्शन करने लगे कि अब हमको अमेरिका से इंपोर्ट करना नहीं पड़ता था. तो दिस इज द concept of agriculture, green revolution. Sorry. Now इसके बारे में अब देखिए, कुछ यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपके एनसीईआरटी की. So after green revolution, who is interested in your offer? तो देखिए कुछ ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमें ये प्रोडक्शन कर दीजिए, हम आपको ये देंगे. तो पैसे का ऑफर दिया रहा है नहीं, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन करके खुश हैं, उसमें अच्छा खासा उनको अर्न मिल रहा है. और इससे बेनिफिट क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन ने मार्केट में क्या लिया? मार्केटेड सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हो गया. तो मार्केटेड सरप्लस मींस तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमने किया मार्केट में सेल करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज मार्केटेड सरप्लस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल आपको दिखाता हूं मैं. ओके फाइन. नाउ लुक व्हाट आई टॉट यू टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमने किए थे. सो रिफॉर्म्स व्हाट इन द फील्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स? तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, हमने इरिगेशन फैसिलिटीज का एक्सपेंशन किया. लैंड रिफॉर्म्स किए. ग्रेटर यूसेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड रेस्ट्रिक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न. और हमने क्या? रिस्ट्रक्चरिंग क्रॉपिंग पैटर्न. तो हमने क्रॉपिंग पैटर्न को रिस्ट्रक्चर किया.
पहले एक ही तरह की फसल उगाते थे, तो हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया, मल्टीपल क्रॉपिंग किया। लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, तो मैंने बताया था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स किया, कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग, ये मैंने नहीं बताया आपको, मैं बता रहा हूं। तो कंसोलिडेट ऑफ लैंड होल्डिंग का मीनिंग होता है कि व्हेन अ फार्मर हैज स्टैग्नेट लैंड, सपोज एग्जांपल सुनिए, कि सपोज करें कि ए का लैंड एक इधर है, ए की लैंड इधर है, और ए का लैंड इधर है, और एक का लैंड इधर भी है। तो ए पर्सन इज द ओनर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ लैंड। अब सपोज करें ये 2 हेक्टेयर है, ये 1 हेक्टेयर है, ये 3 हेक्टेयर है, ये 2 हेक्टेयर है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई कि ये सभी हेक्टेयर जितने भी लैंड बनती है, तो 3 to 5 6 और 2 8 8 हेक्टेयर लैंड एक ही जगह पे गवर्नमेंट दे देगी। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, ये आपको मैंने बता ही दिया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मीनिंग है मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना कि इससे ज्यादा आपको जमीन नहीं मिलेगी। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग कि अब ये तो क्या हुआ, जो लैंड थी डिफरेंट प्लेसेस पे, अब नेचुरली कहा है कि लोग हमारे यहाँ मानते नहीं, तो उस समय भी लोगों ने नहीं माना। क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं हुए अपनी ये वाली जमीन देने को, वो एक्सेप्ट नहीं हुए अपनी ये जमीन देने को। सपोज करो ज्यादा फर्टाइल है या फिर नियर अबाउट है घर के, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। जैसे सपोज करो एक आपका प्लॉट साधनगर में है, एक प्लॉट आपका द्वारका में है, एक प्लॉट आपको राजनगर में है, और आपके सभी 100 गज के हैं, और आपको कहा जाए कि राजनगर में आपको 300 गज जगह दे देते हैं, तो विल यू एग्री? नो, नॉट एट ऑल। तो ऐसे ही ये फार्मर भी तैयार नहीं हुए, तो इसकी स्कीम बनाएगी कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या किया कि लैंड जो है वो एक दूसरे की मिलकर कल्टीवेट करेंगे। जैसे सपोज करो ए पर्सन का ये फील्ड है, यहां पर पर्सन बी का भी फील्ड है, और इधर यहां पर भी है बी का। तो ए इस बी की हेल्प कर देगा इसके फील्ड में, और ए बी इसके फील्ड में इधर हेल्प कर देगा। तो इसका मतलब ए को हर जगह जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक जगह पे अपने पड़ोसियों का भी देखभाल करेगा। उसमें क्रॉपिंग करनी हो, वाटर करना हो, लगाना हो, या कोई और काम करना हो, एक दूसरे की हेल्प करके कोऑपरेटिव करना होगा। तो दिस इज अ स्कीम। मैं आपके इसके रिलेटेड नोट्स दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास जो मैं आज बताया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पहले तो इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड क्रॉप्स। तो green revolution was not successful to the all crops. It was successful only some limited crops such as wheat and rice. Limited states, it was not successful in the all over the states. It was successful only the state which has a efficient, or you can say rich farmers. So it was successful only in Punjab and Tamil Nadu. Benefits of rich farmers, yes, I told you that it was just beneficial to rich farmers because it needs irrigation facility, it needs pesticides, it needs fertilizer like fertilizer and HYV seeds. So all these has to be bought by the farmers. To buy these, farmer need money, and farmers generally don't have money, so that's why it is benefited only for the rich farmers. Increase in economic inequalities, and what does it lead to? It lead to inequalities because the person who have money, they were able to produce more products. As a result, they became more rich as compared to other one. So it leads to inequalities. And environmental damages. It leads to environmental damage because the use of pesticides and extraction of the groundwater by the irrigation facilities, it leads to environmental damage. So these were the limitations of green revolution. Now what was the impact of these? So impact of these, important of productivity, naturally है, इससे आपका productivity increase हुआ. Increase in employment, it also raises employment because farmers were farmers who became rich, they hire people to work on their field. Next, food grain price stability. फूड ग्रेन प्राइस स्टेबिलिटी, लाइक वाइट फूड ग्रेन हमारे बढ़ा और इससे प्राइस स्टेबिलिटी आ गया. फूड ग्रेन कैसे बढ़ गया? हमने बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया अमेरिका से, और प्राइस स्टेबिलिटी भी आ गई.
spectacular increase in agriculture production. So these are the impact. Now what are the components for? So components for this agriculture sector, or you can say green revolution, that use of HYV seeds. This is the use of HYV seeds. Multiple cropping pattern. So because multiple cropping pattern, that means you need not to go a systematic pattern, just you have to rotate some crops. Price incentives, government also did price incentive by giving cheaper for pesticides and fertilizer on subsidize. Better infrastructure facilities, mechanisms of farming, and better financial assistance. So these were some of the components to be need for the green revolution. So this is the topic for green revolution and agriculture sector. Now you have to go through all these notes from your NCERT as well as the notes which I have sent to you. This is the concept which we are going to learn today. So as you know that economists have found that poor nations can progress only if they have good industrial sector. It means अगर कोई country poor है तो वो कब growth कर पाएगा? तो when it has a good industrial sector. And India was poor at that time. Industry provides employment. अब कैसे होगा तो देखो कितना लंबा चेन बनता है. Industry provide employment, which is more stable than the employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development. So you might have studied the previous chapter that at the time of independence, variety of industries was very narrow. So what you got to in this sentence, that if industry is there, then employment will increase, and employment will be more stable than agriculture sector, because as you know that agriculture provides only seasonal employment, but industry can provide permanent employment throughout the year. So here are some industries largely confined to cotton, textile, and jute. So at the time of independence, we were more confined to cotton and jute only. There were two well-managed iron and steel firms, one Jamshedpur and other Kolkata. But obviously, we needed to expand the industrial base with a variety of industries in the economy was to grow, if the economy was to grow. So you can, the one more question here, that name the industries. टाटा आयरन एंड स्टील फर्म्स. तो टाटा आयरन स्टील फर्म्स किसका कहां से पर थी? जमशेदपुर में. और दूसरा जो अदर है कौन सा? कॉटन जूट, वो कोलकाता का इंडस्ट्री हमारे सेटअप था. नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? द बिग क्वेश्चन facing the policy makers was what should be the role of the government and what should be the role of the government and private sector in industrial development. So at the time of independence, Indian industries did not have capital. देखिए कैपिटल मीन्स जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए वो उस समय उनके पास उतना नहीं थे. Principally for these reasons that state had to play an extensive role in promoting industrial sector. So it means government has a very vast role in industrial sector. The decision to develop Indian economy on socialist line led to the policy of the state controlling and commanding heights of the economy. As second 5-year plan put in, this meant that state would have complete control of those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector would have complementary of those of the public sector, with the public sector leading the way. So that means here the conclusion is this,
that our government has to play a bigger role, because we want commanding economy, or you can do socialist economy. So for this, government can play a vital role. How it played? To look. For this, what the government has done. मैंने आपको एक IPR बताया था. Now the IPR 1956. What was the objective of this IPR? So IPR 1956, as you know, it is called as Industry Policy Resolution. इससे पहले 1948 में IPR था, वो तो इनिशियल IPR था. ये हमारा मेन IPR था जो हमने अपनी 5 ईयर प्लान में बनाया था, सेकंड 5 ईयर प्लान. आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हमारा 1951 में हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 में. तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो हमने एक आईपीआर बनाया अपना. अब आईपीआर में क्या क्या होगा, अब आप ध्यान से सुनना आईपीआर के क्या क्या रूल्स हैं. In accordance with the goal of state controlling commanding heights of the economy, IPR 1956 was adopted. This resolution formed the basis of second 5 year plan. अब जैसे मैंने बताया second 5 year plan 1956 से start हुआ था, वह plan which tried to build the basic of socialistic pattern of society. This resolution classified, अब देखिए, this resolution classified industry into 3 categories. यानी इस आईपीआर में हमने क्या किया, इस आईपीआर 1956 में अपनी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया. द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय द स्टेट. अच्छे से सुनना, पहले में हमने उन इंडस्ट्रीज को रखा जो 100% स्टेट ओनर होगा, यानी जो राज्य उसका मालिक है. द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर would supplement the efforts of the state. और सेकंड कैटेगरी में कौन से होंगे, प्राइवेट सेक्टर होंगे जो कि स्टेट के सप्लीमेंट के फॉर्म में काम करेंगे. विद द स्टेट टेकिंग द रोल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स, जिसमें पूरा रोल स्टेट का होगा. द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर. और तीसरी कैटेगरी में हमने उनको छोड़ दिया जो प्राइवेट सेक्टर के लिए. तो आप देखो 3 आईपीआर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा. आईपीआर 1956 के मेन 3 पॉइंट बताइए क्या था. तो फर्स्ट हमारा था आपके पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी थी जो 100% स्टेट रन करेगा. सेकंड कैटेगरी थी जो प्राइवेट रन करेगा बट स्टेट उसका सप्लीमेंट होगा. और तीसरा वो सिर्फ प्राइवेट रन करेगा. सो लुक, कुछ इसके नाम भी दे रखे हैं, नहीं नाम नहीं है एनसीईआरटी में. ओके, नाम मैं आपको नोट्स में दे दूंगा. Although there was a category of industrial left to the private sector, the sector was kept under the control through a system of license. अब जैसे आपने देखा है, देखो फर्स्ट किसके अंडर में था, स्टेट के अंडर में. सेकंड किसके अंडर में है, प्राइवेट है बट उसका स्टेट कंट्रोल करेगा. और थर्ड 100% प्राइवेट है बट 100% प्राइवेट तो है बट अब देखो यहां पर क्या है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. ये आप देखना 3 में लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा. नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन. इट वाज इजियर to obtain a license if industrial unit was established in an uneconomically backward area. अब देखिए ऑब्जेक्टिव देखिए कितना अच्छा था गवर्नमेंट का उस समय कि आप अगर किसी ऐसे एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जो बैकवर्ड है तो आपको लाइसेंस मिलना आसान होगा. तो इसलिए लोगों ने क्या किया, उस समय में वहां फैक्ट्रियां खोलने की कोशिश की जहां पर बैकवर्ड एरिया था ताकि वहां पे उनको लाइसेंस आसानी से मिल सके. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits, electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. अब मीनिंग समझिए कितना इंपॉर्टेंट मीनिंग है. एक एक लाइन आपको डिटेल में बताई जा रही है कि रीजन इक्वालिटी लेकर आनी है. आपने देखा कि जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था तो हमारे कुछ स्टेट थे जो डेवलप्ड हो गए थे लेकिन कुछ एरिया बहुत ही बैकवर्ड थे. डेवलप्ड वही एरिया हुए थे जहां पर पोर्ट था,
ताकि समुद्र का सामान आसानी से समुद्र के थ्रू आसानी से आ जा सके, वो पोर्ट वाले एरिया उन्होंने ज्यादा डेवलप कर लिया, फिर जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता था। लेकिन कुछ एरिया हमारे बैकवर्ड हो गए, तो उस बैकवर्डनेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 तरह की हमारी आईपीआर पॉलिसी के अंदर इंक्लूजन्स रखा। फर्स्ट आपको बताया जो कि स्टेट रन होंगी, सेकंड होंगी जो होंगी प्राइवेट ओनरशिप के फॉर्म में बट कंट्रोल होगा स्टेट का, थर्ड 100% प्राइवेट के फॉर्म में होंगी। और फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रखा, लाइसेंसिंग उन एरियो में दिया गया जहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया होंगे ज्यादा। नाउ even an existing industry had to obtain a license for expanding output, for diversifying production. अगर आपको प्रोडक्शन चेंज करना है या आउटपुट बढ़ाना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे पहले से लाइसेंस क्यों ना हो आपके पास। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. तो ताकि डिमांड जितनी है वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई हो पाए, इसलिए ऐसा किया गया था। License was to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity. तो अगर लगता है इकोनॉमी को क्वांटिटी चाहिए ज्यादा तब लाइसेंस दिया जाता था। तो ये था उस समय की 1956 की पॉलिसी। तो आई होप कि अब आप 1956 की पॉलिसी अपने लेवल पे लिख सकते हैं। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे अब आपने सुना होगा, आजकल हमारे मोदी जी काफी बोल रहे हैं, एमएसएमई के बारे में बोल रहे हैं। तो एमएसएमई जो है वो यही इंडस्ट्रियां हैं, एमएसएमई मीडियम, ये एमएसएमई मीडियम, सेमी मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रियां हैं, मीडियम एंड सेमी मीडियम को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से आता है। तो इन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सो इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी was called the Carvey Committee. Listen carefully. 1956 में एक कार्वे कमेटी बनाई गई जो कि responsibility of using small scale industries for promoting rural development, जिसका एम था कि रूरल डेवलपमेंट किया जाए। तो कार्वे कमेटी याद रखना नाम, इसका एम था रूरल डेवलपमेंट करना। A small scale industries is defined the reference to maximum investment allowed on the assets of a unit. The limit was changed over a period of time. In 1950, a small scale industries was one which invested, अब ये समय समय पे इसकी चेंज हो रही है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन 1950 में इसका था अप टू 5 लाख। तो अगर कोई इंडस्ट्री, अब सुनना रूल, कोई इंडस्ट्री 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी। लेकिन आज के समय में अब इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी इंडस्ट्री कौन सी है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इट इज बिलीव्ड, और पहले क्या था? 5 लाख रुपए। इट इज बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर से ज्यादा काम कराएंगे। दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एम क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with the big industrial firms. It is obvious that development of small scale industries requires to be shielded from the large scale. अब क्या था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल से शील्ड करना था, उनको बचा कर रखना था। तो फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो हमने क्या किया इसमें? तो कुछ प्रोडक्ट जो थे वो रिजर्व कर दिए कि ये प्रोडक्ट ओनली कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। The criterion of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. They are also given concessions such as lower excise duty and bank loan and interest rate, lower interest rate. तो ये कुछ उनको कंसेशन दिए गए थे।
नाउ दिस इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया इसमें 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अब हो सकता है, पहले 5 लाख रुपए तक का था। इनको सील्ड किया गया था, बचाया गया था प्राइवेट लार्ज इंडस्ट्री से। अब है हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। द गुड्स which we are importing from rest of the world are to be produced within our own country is called import substitution. So this was import substitution policy which was adopted during the I will not accept this person. So technically this strategy was called import substitution. तो जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको अपने कंट्री में बनाना वो import substitution कहलाता है. This policy aimed at replacing or substituting import which domestic production, for example, अभी वही दे रखा है, ठीक है, इतना एग्जांपल देंगे. For this, two words are to be known: quotas. Quotas means maximum limit, फिक्स करना कि इससे ज्यादा आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो these are called quota. एंड टैरिफ वर्ड कहां गया. टैरिफ होता है टैक्सेस लगाना. ये टैक्सेस, टैरिफ्स टैक्सेस होते हैं कि जो भी आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स लगा देना. तो आप अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करना चाहते हैं तो हम टैरिफ और कोटा से सेव किया था हमने. नाउ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका इफेक्ट क्या होगा. तो अब इफेक्ट है हमारा जीडीपी राइज हो गया है, तो उसमें डेटा है, तो वो आप स्टडी के लिए आप अपना आप करेंगे. इसमें डेटा याद नहीं होता है. That's it. फिर तो कंक्लूजन ही आ गया. नो दैट्स इट, इतना ही है इसमें बेसिक है. नाउ लुक, नाउ look at this, that this is the summary of this chapter as we have completed this chapter. So today I explained you, I am just explaining the today's topics only. Is it visible? Yes, sir. चले क्यों जाते हैं क्लास से, फिर बाद में बीच में आ जाते हैं. So look, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, मैंने जो आज बताया मैं उसका रिकैप करवा रहा हूं. वैसे पूरा चैप्टर है, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमने एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया था. अब क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे. द पॉलिसी आईपीआर 1956 आप एक्सप्लेन करेंगे. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब नेचुरली है, इसका क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बना क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया. सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, हमने एक मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग आया, मींस फार्मिंग के अंदर भी हमने मशीन्स का यूज किया. इम्पार्ट्स डायनेमिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, हमने ग्रोथ प्रोसेस कर लिया. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया. तो दिस इज द इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंस. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो मैंने बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इमर्ज्ड एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी विद रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों का कंबाइंड रोल था. So role and public sector in industrial development. So first point is
लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये अभी मैंने बताया था आपको, कैपिटल की कमी थी हमारे पास. लैक ऑफ इंसेंटिव्स among the private enterprises and socialistic pattern society. So this is the role of public sector. इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेजिस्लेशन 1956, तो मैंने बताया था उसमें 3 हमने कैटेगरी में डिवाइड की थी, तो उन तीनों के बारे में. आईपीआर 1956, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल शॉप्स. तो ये हमारे कुछ तीन इसके कंपोनेंट थे. तो तीनों के बारे में आपको बताएंगे. आईपीआर में तीन कैटेगरी कौन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा. एंड लास्ट वन इज ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बताया था आपको. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस द गुड्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and they are to be produced within our own country. So this is the summary of this